बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेट माइग्रेशंस। ये पैसेज 2 है, बुक 11 का, टेस्ट 3। टेस्ट 3 बुक 11। एनिमल, सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। एनिमल माइग्रेशन however it is defined is far more than just the movement of animals. It can loosely be described as travel that take place at regular intervals. ये क्या है, travel regular intervals, often in an annual cycle that may involve many numbers of species and is rewarded only after a long journey. It suggests inherited instinct. The biologist Hugh Dingle has identified 5 characteristics that apply in varying degrees and combinations to all migration. They are prolonged movements that carry animals outside familiar habitats. They tend to be linear, not zigzaggy. They involve special behavior concerning preparation, overfeeding, and arrival. They demand special allocations of energy. And one more, migrating animals maintain an intense attentiveness to the greater mission, which keeps them undistracted by temptations and undeterred by challenges that would turn other animals aside. इंट्रोडक्शन की आप समझ आ गई। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नॉन्स, इन सबको क्या करेंगे, हम अंडरलाइन कर लेंगे। आज ज़रा आप अपने क्वेश्चंस पे 14 to 18 आपका क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू क्या होता है, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी गई है वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है वो पैसेज में मौजूद हो, लेकिन ये है कि सिनोनिम्स में दी गई हो। फॉल्स क्या होता है, जो स्टेटमेंट जहाँ पे तो मौजूद है लेकिन पैसेज में भी मौजूद है। सपोज यहाँ पे लोकल गर्ल्स है एंड माइग्रेटिंग आर्कटिक टर्न्स, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे चेंज क्या आएगा, सेम बिहेवियर इन द सेम वे, हो सकता है वो डिफरेंट वे से बिहेव करते हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। अगर इनके बारे में लोकल गर्ल्स और माइग्रेटिंग आर्कटिक टर्न्स की बात ही नहीं है तो ये हमारा क्या होता है, नॉट गिवन है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लोकल गर्ल्स एंड माइग्रेटिंग आर्कटिक टर्न्स बिहेव इन द सेम वे व्हेन दे ऑफर्ड फूड। जब उनको फूड मिलता है तो वो सेम वे में बिहेव करते हैं। आपने सेम का देखना है, यहाँ पे डिफरेंट है या सेम है, बस ये फ़र्क आप लोगों ने देखना है। लोकल गर्ल्स हम सर्च करेंगे और माइग्रेटिंग आर्कटिक टर्न्स को हम सर्च करेंगे। पहला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे लोकल गर्ल्स और माइग्रेटिंग आर्कटिक टर्न्स नहीं है। यहाँ पे आ रहे ज़रा, ये क्या है, आर्कटिक सर्कल है, ये आ गया लोकल गर्ल्स और आर्कटिक टर्न्स किधर है, एंड ये आर्कटिक फर्स्ट लाइन में। एन आर्कटिक अराउंड 20,000 किलोमीटर्स फ्लाइट फ्रॉम द एक्सट्रीम साउथ ऑफ साउथ अमेरिका to the Arctic Circle will take no notice of nice smelly herring offered for a birdcatcher boat along the way, while local girls will dive because for such handouts। मतलब ये लोकल गर्ल्स जो केयर नहीं करते और जो आर्किटन्स जो है वो केयर नहीं करते, और लोकल गर्ल्स जो है वो फूड के लिए समंदर में छलांग लगा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। क्या करते हैं वो, बिहेवियर करते हैं डिफरेंट वे से। Experts' definitions of migrating tend to vary according to their area of study. Experts' definitions of migrating tend to vary मतलब फ़र्क करती है according to their area of study। क्या फ़र्क करती है, एरिया के मुताबिक। डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन, ये अब हमने देखना है। ये आ गया सेकंड पैराग्राफ है। बट माइग्रेशन, थर्ड पैराग्राफ, बट माइग्रेशन इज कॉम्प्लेक्स इशू
and biologists define it differently depending in part on what sorts of animal they study. Joel Berger of the University of Montana. But migration is complex issue, and biologists define it differently depending in part on what sorts of animals they study. Depending in part, यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ स्टडी। तो हमारा ये क्या है, ट्रू है। वेरी करता है कि नहीं करता है। Define it differently depending in part on what sorts of animals they study. Next paragraph. Very few experts agree that the movement of aphids can be considered migration. Very few experts agree the movements of aphids. अब हमने आंसर क्या सर्च करना है कि few experts agree हैं या ज़्यादा। मूवमेंट ऑफ एफिड्स कैन बी कंसिडर्ड माइग्रेशन। मूवमेंट की बात हुई है एफिड्स की। एफिड्स देखिए ज़रा किधर है। मूवमेंट्स फ्रॉम अ सीजनल होम एरिया, यहाँ पे आ जाए प्रैक्टिकल डेफिनेशन सूटेड बीस्ट्स। Movements from a seasonal home area to another home area and back again. Generally, the reason for such a seasonal back and forth movement is to seek resources that aren't available within a single year round. तो ये हमारा आंसर क्या है, नॉट गिवन है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एफिड्स की बात ही नहीं की हुई। नेक्स्ट पे आ जाए। एफिड्स जर्नीज आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लाइट दैट दे परसीव। एफिड्स जर्नीज आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लाइट, चेंजेस इन द लाइट। लाइट का वर्ड किधर है, एफिड्स। लाइट तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट पे, ये आ गया एफिड्स। दे अलाउ फॉर द फैक्ट दैट एफिड्स विल become sensitive to blue light when it comes time for take off on their big journey and sensitive to yellow light। तो लाइट का उनके ऊपर इफेक्ट है, हम लोग क्या कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट पे है Dingle's aim is to distinguish between the migratory behaviors of different species। Dingle's aim is to distinguish, क्या उसका मकसद यही है कि वो फ़र्क करें बिटवीन द माइग्रेटरी बिहेवियर्स डिफरेंट स्पीशीज़। माइग्रेटरी बिहेवियर, ये है डिंगल, is that it focuses attention on that a phenomena of wild beast migration shares with the phenomena of the aphids and therefore helps guide researchers towards understanding how evolution has produced them all। They have to distinguish between the migratory behaviors of different species। ठीक है, ये आंसर हमारा क्या है, इसको आप दोबारा ज़रा देखिए। Hingel's aim is to distinguish between the migratory behavior of different species, and is that it focuses attention on the what the phenomena of wild beast migration। तो ये क्या कहते हैं, शेयर्स विद द phenomena of the aphids। उसने तो यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, therefore guide researchers towards understanding how evolution has produced them all। तो इस तरह की उसने माइग्रेटरी बिहेवियर्स की बात नहीं की हुई, वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन शेयर्स की उसने यहाँ पे बात किया। तो हमारा आंसर क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट पे है ज़रा क्वेश्चन नंबर 19 to 22। चार क्वेश्चन है ये वाले, इनको हमने सॉल्व कैसे करना है। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग। ये जो सेंटेंस है इसकी एंडिंग हमने कंप्लीट करनी है, A to G यहाँ से लेके यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू डिंगल माइग्रेटरी रूट्स आर लाइकली टू, डिंगल माइग्रेटरी रूट्स आर लाइकली टू। अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी रूट्स आर लाइकली टू। अकॉर्डिंग टू डिंगल
Attention on what the phenomena of wild beast migration shares with the phenomena of the efforts perhaps guides researcher towards as how evolution has produced them all. यहाँ से हम देखेंगे be discouraged by difficulties, travel on open land where they can look, eat more than they need for immediate, be repeated daily, ignore distractions, be governed by the availability of water, follow a straight line. इन सब में से कौन सा आंसर आ रहा है? अब यहाँ पे तो मुझे नहीं कोई खास चीज़ नज़र आ रही, तो यहाँ पे देख लेते हैं. ये डिंगल from a biologist who studies insects, his definition is more intricate. The burger setting those five features that distinguish migration from forms of movement. They allow for the fact that अब यहाँ पे ये उसने 5 सर्चेस की हैं. Human behavior, however, is having a detrimental effect on animal migration. The pronghorn, which resembles an antelope though they are unrelated, is the fastest land mammal of the New World. One population which spends the summer in the mountains. Grand यहाँ पे थोड़े अच्छा इसको छोड़ देते हैं हम लोग. 19 को 20 वाला देते. प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन एनिमल्स आर लाइकली टू प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन एनिमल्स आर लाइकली टू. The phenomena of wild beast migration shares with the phenomena of the aphids and therefore helps guide researchers towards understanding how evolution has produced them all. How evolution has produced them all. Arctic tons listed. पीछे चले जाइए ज़रा यहाँ पे. Movements in the ocean upward by night to seek food, but daily vertical movements by zooplankton in the ocean upward by night to seek food, downward by day to escape predators can also be considered migration. Primarily animals are likely to prepare for migration. Animals are likely to eat more than they need for immediate purposes. Having depleted the young leaves, no one fruit their sorry कहाँ पे हमने पढ़ा था. Movements by the upward by night to seek food. यहाँ पे वो खाने को सर्च करने can also be considered migration. So the movement of aphids when having young leaves and food their offspring then onward. तो आंसर हमारा क्या है इसका? सी. एक्सपीरियंस ज़रा. ड्यूरिंग माइग्रेशन एनिमल्स आर अनलाइकली टू. माइग्रेशन के दौरान वो क्या करते हैं? To prepare for migration, animals are unlikely to. यहाँ से भी हम आंसर इसका दे सकते हैं. When it's time for take off on their big journey and sensitive to yellow light, when it's appropriate, birds will fatten themselves with heavy feeding. वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं in advance of a long migration flight. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? Eat more than they need for immediate proceed. During migration, animals are unlikely to. Migration के दौरान animals क्या नहीं करते? The value of his definite Dingle's argues that focuses attention on what the phenomenon of wild beast migration shares with the phenomena of the aphids, therefore helps guide researchers towards understanding how evolution has produced human behavior. Determined vector animal migration. The pronghorn, which are antelope, though they are unrelated, is the fastest mammal of the new.
These pronouns are notable other than various of their migration route and the severity of construction three bottlenecks. If come through ये यहाँ से नहीं आंसर हमें मिल रहा, हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे. क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट वाला? ड्यूरिंग माइग्रेशन एनिमल्स आर अनलाइकली टू when birds will fatten themselves with heavy feeding in advance of a long migration flight, the value of is definite. यहाँ पे 'night to seek food'. अच्छा, यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाए. During migration, animals are unlikely to. During migration, animals. Okay, sorry. Animals पे सर्च करना है मैंने, तो animals तो इधर ही आ रहा है ना. Here they wait out the frozen months, feeding mainly on sagebrush, blow clear of. This prolonged notable for the influence of their migration route and the severity of its construction. If they can't pass through each of the three during their spring, they can't reach their bounty of summer grazing. If they can't pass through again in autumn, escaping south on, they are likely to die trying to overwinter in the deep snow. Pronghorn depend on the distant vision and speed to keep safe from predators. Traverse high open shoulders. They can see the run at one of the bottlenecks forested hills to form. Filled with private homes, increasing development is tending towards a crisis for the pronghorn, threatening to choke with their passageway. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ड्यूरिंग माइग्रेशन animals are unlikely to. समर इन द माउंटेन्स मतलब काफ़ी सारी उनको मुश्किलात आती हैं इस बीच में. तो आंसर हमारा क्या है? बी डिस्कस्ड बाय डिफ़िकल्टीज़. वो अपना सफ़र करते रहते हैं, उसको ड्रॉप नहीं करते. आर्कटिक टर्न्स Arctic terns illustrate migrating animals' ability to. Arctic terns illustrate migrating animals' ability to. Arctic terns किधर है? Arctic terns illustrate migrating animals' ability to. Arctic terns है. यहाँ पे देखो ज़रा, कहीं पे भी है नहीं है यहाँ पे. तो नेक्स्ट पीछे हमने पढ़ा था, इसका यहाँ पे देख लीजिए. Arctic tern is 200 kilometers from the extreme south of South America. Arctic tern circle will take no notice of nice smelly herring offered from a bird catcher. यहाँ पे वो किसी चीज़ को भी इग्नोर, सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. आंसर हमारा क्या है? बी रिपीटडली इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस. वो जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनके रास्ते में आती हैं, उन सबको इग्नोर करते जाना. तो आंसर क्या है हमारा? ई. अब अकॉर्डिंग टू डिंगल माइग्रेट रूट्स आर लाइकली टू. अकॉर्डिंग टू डिंगल. An evolutionary biologist who studies insects, his definition more migratory routes are likely to become center of blue light. How evolution produced them all. Migratory routes are likely to, क्योंकि वो यहाँ पे जो लाइट है उसका उन पे इफेक्ट करती है, तो फिर उनको सीधा ही चलना पड़ता है. तो हमारा आंसर क्या है? जी, फॉलो अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा समरी पे. कंप्लीट द समरी बिलो. वन वर्ड ओनली. एक ही वर्ड यहाँ से आपने लिखना है. द माइग्रेशन ऑफ pronghorns. Pronghorns rely on their eyesight and dash to avoid predators. Pronghorns rely on their eyesight and dash to avoid predators. Avoid का सिनोनिम हम देखेंगे, इसके पीछे जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा.
आई साइट किधर है? और प्रोंग हॉर्न्स और आई साइट, ये प्रोंग हॉर्न है, are notable for invariance of their migration route and severity of its constriction at three bottlenecks. If they can't pass through each of three during the eyesight किधर है? Distance vision, deep snow, eyesight and dash to avoid predators. Pronghorns rely on their eyesight and dash. Pronghorn, which resembles an antelope, they are unrelated, is fast and mammal of the New World. Animal migration. The pronghorn, which resembles an antelope, though they are unrelated, is the fastest land mammal of the New World. Fastest. It spends the summer in population ignored route of summer range in the mountains plains. Here they wait out the frozen months. These pronghorns are notable for the interference of their migration routes and severity of its constriction. They during their spring migration reach their grazing. Yeah, yeah, eyesight. Where they can see and run. रन मतलब speed. Eyesight and speed to avoid predators. मतलब वो देखते हैं और भाग जाते हैं. One particular population summer habitat is a national park and their winter home is on the dash where they go to avoid the danger presented by the snow at that time of year. National park. नेशनल पार्क किधर किधर है हमारा? ये हमारा आंसर इधर था. अब नेशनल पार्क ये आ गया. नेशनल फॉरेस्ट्स, ठीक है. ये आ गया नेशनल पार्क. हमने अब देखना है कि नेशनल पार्क मिल गया एंड देयर विंटर होम इज ऑन द डैश वेयर दे गो टू अवॉइड द डेंजर. विंटर होम इज ऑन द डैश. अब हम देखेंगे विंटर किधर है. Has reclaimed the part of the Prohorn, much of which passes across its land as a protected migration corridor, but neither the Forest Service nor the Park Service can control what happens on private and what certain migration species. The challenge is complicated. One particular popular summer habitat is a national park, and their winter home is on the dash. Winter home is on the dash. Overwinter in the deep snow. Escaping south onto those wind-blown plains, they are likely to die trying to over. यहाँ पे आ गया आंसर plains. If they can't pass through again in autumn, escaping south on plains, they are likely to escape. किससे करते हैं वो? autumn से. किधर से? plains. Where they go to avoid the danger presented by the snow at that time of year. However, their route between these two areas contains three dash. क्या? If they can't pass through each of the three during their spring months, they can't reach their bounty of summer grazing. Dash 3. At one of the bottlenecks, forested hills to rise to, filled with where they can see and run. At one of the bottlenecks, forest hill rise to form a V living corridor of open ground all filled with private homes. Bottlenecks. Three bottlenecks.
One problem is the construction of new home in a narrow dash of land on the prolonged roads. One problem is the construction of a new home in a narrow of dash of land in a narrow. Forested hills rise to form we leaving a corridor of open ground only about 150 meters wide. मतलब जिसकी जो सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर वाइड है कॉरिडोर। आंसर क्या है हमारा? कॉरिडोर। ये था हमारा आज का टॉपिक। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।